Hello friends, welcome in your physics class. For complete course, press subscribe button and bell icon and watch our videos regularly. So friend, you are watching vessel, liquid in a vessel. आप देख रहे हैं लिक्विड वेसल के अंदर में, राइट? अब देखिए ये स्टेट कैसा है. जो भी लिक्विड का स्टेट हो, आई एम टॉकिंग अबाउट थर्मोडाइनमिक स्टेट. Whatever it may be, it is described by few physical quantities such as pressure, volume, temperature, density, internal energy and mass. कुछ समय के बाद जब ये वेसल गैस के ऊपर रखा जाएगा बॉईल करने के लिए, ओके, सो बॉइलिंग के बाद ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज के वैल्यू बदल जाएगी. लिसन केयरफुली व्हाट I said. The values of all these physical quantities will vary when the thermodynamic state of the system will change. These new values of pressure, volume, temperature, etc. will describe its new state. So the physical quantities which describes the thermodynamic state of the system are called state variables. These are measurable, observable, characteristic or property of a system when the system remains in equilibrium. Let us now divide these variables into two categories: intensive variables and extensive variables. Intensive variables are those variables which do not depend on size of system, while extensive variables are those variables which depends on size of system. तो दोस्तों यहाँ हम समझे कि दो प्रकार में हम वेरिएबल को बांटे. एक प्रकार था इंटेंसिव वेरिएबल वाला और दूसरा प्रकार है एक्सटेंसिव वेरिएबल वाला. इंटेंसिव उसे कहिए जो सिस्टम के साइज के साथ बदलता नहीं. एक्सटेंसिव उसे कहिए जो सिस्टम के साइज के साथ चेंज हो जाता है. एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं. लेट अस सी द एग्जांपल टू क्लैरिफाई दिस फैक्ट. You are watching thermodynamic system in equilibrium. Let us divide its compartment into two parts. Now, the size of each half is changed than the previous one. It means size of system is now changed. It is very clear that its volume is now decreased by half its original value. So the volume become V by 2. And what about the mass? Mass become M by 2. Internal energy is also reduced, that is half. It become half. And while pressure, temperature and density of the system remain constant. Yeah. It means that volume, mass and internal energy are extensive variables, while pressure, temperature and density are intensive variables because they do not change with size of system. So दोस्तों जो सिस्टम के साइज के साथ चेंज होता है वो एक्सटेंसिव वेरिएबल, जो नहीं होता वो इंटेंसिव वेरिएबल. चलो क्लियर हो गया. लेट अस सी द नेक्स्ट टर्म, थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम. फ्रेंड्स, we have heard the word equilibrium from the very beginning. A mechanical equilibrium we have seen while using Newton's law and its problems. Okay? Here we are talking about thermodynamic equilibrium. What it could be? A system is said to be in thermodynamic equilibrium if its state variables do not change with time. मतलब समय के साथ यदि इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा चेंज नहीं होता है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, थ्रू आउट, तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम में है, अदरवाइज नहीं. थर्मोडाइनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स. नंबर 1, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. सेकंड, chemical equilibrium, and third,
thermal equilibrium. Let us see one by one. Mechanical equilibrium. When net force within the system and between system and its surrounding is zero, then system is said to be in mechanical equilibrium. आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं, a system is in mechanical equilibrium when the pressure in it is the same throughout and does not change with time. इसका मतलब क्या हो गया? यदि प्रेशर कांस्टेंट होता है थ्रू आउट तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम संभव है. So next is chemical equilibrium. A system is said to be in chemical equilibrium when its chemical composition is same throughout and does not change with time. It means that in the system there is no chemical reaction taking place. So, the chemical composition will remain unaltered, unchanged, and you may say that it attains chemical equilibrium. अगर केमिकल कंपोजिशन सेम रहता, यदि कोई नया कंपाउंड अंदर में भीतर में फॉर्म नहीं होता, यदि वो केमिकली इनएक्टिव होता, तो आप कह सकते हो केमिकल इक्विलिब्रियम में है. अब थर्ड टाइप है थर्मल इक्विलिब्रियम, जो आपसे परिचित है. When temperature of system is uniform throughout and does not change with time, the system is said to be in thermal equilibrium. Clear? So what is thermal equilibrium? यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज बाकी नहीं रहा, ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा. दैट मीन्स थर्मल इक्विलिब्रियम होगा. ठीक है, चलिए अब रिवीजन पर्पस के लिए हम सबको इकट्ठा साथ में लिखते हैं. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर कांस्टेंट रहता है. केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट रहता है. तो थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. ठीक है, तो ये तीनों बातें आप ध्यान में रखिए. एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट of thermodynamic system is completely described by thermodynamic state variables. For example, gas enclosed in a cylinder fitted with movable frictionless piston is our system. Its equilibrium state can be described by values of pressure, volume, temperature, and mass. So, what is a learning? Equilibrium state can be described by its state variables. But my dear friends, thermodynamic system is not always in equilibrium. Example, when a football is punctured, air inside the football escapes and suddenly expands in the surrounding. During rapid expansion of air, pressure of air may not be uniform throughout. Now remember what I said in mechanical equilibrium. Pressure must be same throughout, which is not seen here. Hence, system is not in equilibrium. Clear? Let us discuss one more example. The fuel in the cylinder of an automobile engine undergoing an explosive chemical reaction when ignited by spark. In this process, temperature and pressure are not uniform. Hence, system is again not in equilibrium. So these are the cases of non-equilibrium systems. Such non-equilibrium systems cannot be described by thermodynamic state variables. So we have learned that thermodynamic state variables describe the equilibrium state of system only. In these systems, various state variables are interdependent. That means they depend on each other. Okay. For example, if the pressure of the system is changed, then the chances are very high that its density, volume, temperature may get affected. Clear? That is what I mean to say interdependent. These variables are related by mathematical equation such as PV equals nRT, where P is a pressure, V volume, and number of moles, R
universal gas constant, and T absolute temperature. This equation describes thermodynamic state, hence it is called equation of state. दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको समझ में आ गया। आपके विचार आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दोस्तों अगर इस चैनल पर आप पूरा कोर्स फ्री में पाना चाहते हैं तो बस सब्सक्राइब का बटन दबाकर नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन जरूर दबाएं और यदि आपको वीडियो दिल से पसंद आया तो सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।